So the next formula is, if ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of straight lines, then the sum of the slopes of the lines is minus twice h by ab. सम ऑफ द स्लोप्स अगर फाइंड आउट करने के लिए देगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, माइनस ट्वाइस एच बाई बी, माइनस ट्वाइस एच बाई बी. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स इज ए बाई बी. ओके, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन इज ए बाई बी. ऑलराइट, सो कभी कभी ऐसा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन के, फाइंड आउट द सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का क्वेश्चंस में. तो फिर सम ऑफ द स्लोप्स में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस ट्वाइस एच बाई बी. whereas in product of the slopes of the lines we can apply this formula, that is a by b. ठीक है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. once again I am repeating the formula. if ax square plus twice hxy plus by square equal to 0 represents the pair of straight lines, फिर से मैं बता रहा हूं, pair of straight line is nothing but the combination of two linear equation. okay, represent the pair of straight lines, then the sum of the slopes, मतलब वो जो दो स्ट्रेट लाइन को कंबाइन करना है तो दोनों स्ट्रेट लाइन का सम ऑफ द स्लोप्स क्या होगा, माइनस ट्वाइस एच बाई बी. whereas the product of the स्लोप्स बताया गया, इसका मतलब वो जो दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं वो दो स्ट्रेट लाइंस का स्लोप्स का प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू a बाई बी. ऑलराइट, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, तो फिर और जल्दी क्लियर हो जाएगा. सपोज देयर इज वन इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. okay, this is one equation which represents the pair of straight lines. This equation represents the pair of straight lines, right? Find the sum of the slopes and the product of the slopes from this equation. So then how can you find? The first step, whenever you are asked to find the sum or product of the slopes of the lines, the first step is compare the equation with the standard form. The standard form is ax square plus 2hxy plus by square. This is equal to 0. Yes. So if I compare this equation, we will get a is equal to 6. Then twice h is equal to minus 5, or h is equal to minus 5 by 2, and b is equal to 1. right? कंपेयर करके a, h और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली. ओके, सो सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस ट्वाइस एच बाई बी. सो देयरफॉर सम ऑफ द स्लोप्स is equal to minus twice h by b. So if twice h is equal to minus 5, then minus twice h is equal to 5 only. So 5 by b, the value of b is here 1. So sum of the slope will be 5 only. Okay, then what will be the product of the slope? Product of the slope का फॉर्मूला क्या है, a by b. a is 6, b is 1, so answer will be 6 only. Okay, so sum of the slope is equal to 5, whereas product of the slopes of the lines is equal to 6. So in this way you can find out the sums and product of the slopes of the lines. Okay, so ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया बहुत बार. ठीक है, so sum of the slopes, product of the slopes का फॉर्मूला याद रखना है. The next formula is the angle between a pair of lines. एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ लाइन्स, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन्स, अभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में है, तो इसलिए एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइन्स. इफ थीटा इज द एंगल, लिसन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then look at the formula. I have written total two formula. The first one is cos theta is equal to plus minus of a plus b by root over a plus b by under root a minus b whole square plus 4h square. This is h. Okay, 4h square.
cos theta is equal to plus minus of a plus b by under root a minus b whole square plus 4h square. Now if theta is an acute angle, listen, I have not written that point, I am telling now. If theta is an acute angle, then cos theta is equal to, you have to give modulus of a plus b by, denominator will be same only, a minus b whole square plus 4h square. So if theta is the acute angle, then cos theta is equal to mod of a plus b by under root a minus b whole square plus 4h square. That means just you need to give mod instead of plus minus sign. That's it. That is the difference only. ठीक है? Now one more formula I have written. और इसका मतलब है कि cos थीटा का नहीं तो tan थीटा का कोई एक फॉर्मूला यूज करने से ही होगा. मैं tan थीटा का फॉर्मूला भी क्यों यहाँ पे लिखा, बिकॉज जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किए थे कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला, तब तो हम लोग tan थीटा यूज किया था, है ना. सो यहाँ पे सडनली cos थीटा कैसे आ गया? एक्चुअली फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली यू कैन डिराइव cos थीटा. ये जो tan थीटा का फॉर्मूला लिखा है, यहां से ही cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया जा सकता है, राइट. So that's why I have written the second formula. Tan theta is equal to plus minus of 2 into under root h square minus ab by a plus b. Okay? Tan theta is equal to plus minus of 2 into under root h square minus ab by a plus b. So you can apply either the first one or the second one, because same equation के लिए ही तो दो फॉर्मूला लिखा गया है. Okay? तो जो कंफर्टेबल है वो लिखने से ही होगा. So this is all about the angle between pair of lines. Angle between the pair of lines formula. Let us take one example. Find the acute angle. Find the acute angle between the pair of lines. Find the acute angle between the pair of lines. Y square minus xy minus 6x square is equal to 0. Find the acute angle between the pair of lines y square minus xy minus 6x square is equal to 0. जैसे कि मैं बताया, you can apply either cos theta formula or tan theta. So let me use the tan theta formula. देखते हैं क्या होता है. tan theta का formula अगर use करूंगा तो क्या होगा? So since theta is the acute angle, therefore tan theta is equal to, what is the formula? Plus minus of 2 into, right here, plus minus of 2 into under root h square. तो ये बात है कि ये इक्वेशन से पहले h, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सेम वे कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है. सो लुक एट हियर इन द इक्वेशन द फर्स्ट टर्म इज हियर y, ओके, एंड द लास्ट टर्म इज x. नो प्रॉब्लम, जहां पे x है उसके साथ ही कंपेयर करना है. So the coefficient of x square is here a, and in this equation the coefficient of x square is minus 6. So here a equal to minus 6, b is equal to 1, and twice h is equal to minus 1, whereas h is equal to minus half. Okay, so we know the values of a, b and h. Now what is the formula? Tan theta is equal to plus minus of twice under root h square. H square means 1 by 4 minus ab, this will be then 6 divided by a plus b. A plus b means minus 6 plus 1, that is minus 5. Okay, plus minus of 2 into under root this one, right? So since here already plus minus sign is there, right? Since already here plus minus sign is there, and one more thing, I have not given here modulus sign, you have to give mod. Actually here in the formula modulus sign is there, okay? So modulus is there. So plus minus of 2 into, then here it will be 10 plus 11 by 2 divided by 5, right? So यहाँ से 2 cancel हो जाएगा. So 1 by 4. Sorry, this one will be 25, right? So root over 25 by 5, that is equal to 5 by 5, that is equal to 1. Now since tan theta is equal to 1, therefore theta is equal to pi by 4. Okay, so this is the angle between the pair of lines. Angle between the pair of lines is here pi by 4. Okay, so in this way you have to solve, you can find out the angle, right?
So once again I am repeating the second formula. अगर थीटा एक्यूट एंगल बोल के मेंशन कर देगा तो देन always you have to use modular sign instead of plus minus. Okay, always you have to use modular sign instead of plus minus. So here also no need to write then plus minus because here already I have given the modular sign. Okay, here in case of cos theta also, अगर थीटा का वैल्यू थीटा एक्यूट एंगल बोल के मेंशन करेगा तो मॉड ऑफ a प्लस बी लिखने से हो जाएगा इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस. सो दैट इज व्हाई लुक एट द इक्वेशन. यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में नेगेटिव में आ रहा था लेकिन एक्चुअली मॉड होना चाहिए बिकॉज एक्चुअली द क्वेश्चन इज इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दिस पेयर ऑफ लाइन्स. तो एक्यूट एंगल बोल के मेंशन किया इसीलिए मॉड ऑफ a प्लस बी लिखना पड़ेगा. सो मॉड ऑफ -5 इज 5 ओनली. So after calculation we will get tan theta is equal to 1. Therefore theta is equal to pi by 4. So this is the angle between the pair of lines, right? So angle between the pair of lines में फिर दो केसेस हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी बताऊंगा. वो दो पॉइंट्स क्या क्या है अभी मैं बताऊंगा. ये नंबर 1, ये सब पॉइंट है एक्चुअली, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस का सब पॉइंट है. If theta is equal to 0, then the two lines will be coincident line. Do you know why? If theta equal to 0, then why the two lines, जो दो लाइन को कंबाइन करने से pair of straight lines मिलेगा, why those two lines are coincident lines? Because look at here. Theta equal to 0 means tan 0 will be 0 only. Yes, if I put here theta 0, then we know the value of tan 0 which is 0. तो अगर इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, 2 into under root h square minus ab is equal to 0, or it can be written as under root h square minus ab equal to 0, or it can be written as h square minus ab equal to 0, or we can write it as h square is equal to ab. Already I have given this condition. If h square is equal to ab, then the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents coincident line. That is the reason why the lines are called coincident lines. Because if theta is 0, अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो वो दो लाइन कोइंसिडेंट होगा हमेशा. ओके, कोइंसिडेंट होगा बिकॉज ये फॉर्मूला में यूज करने से ये कंडीशन मिल जाएगा. और ये कंडीशन तो इसके पहले टॉपिक में मैं डिस्कस किया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट. द सेकेंड सब पॉइंट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, if theta is equal to pi by 2, then the two lines will be perpendicular. If theta is equal to pi by 2, then the two lines will be perpendicular. Okay, अभी थीटा का वैल्यू अगर मैं पाई बाय 2 लूंगा तो मैं यहां पे पुट नहीं करूंगा बिकॉज वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ 1090 इज अनडिफाइंड. यस, द वैल्यू ऑफ 1090 इज अनडिफाइंड. तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे पुट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा cos थीटा में पुट करूंगा बिकॉज दे आर वाइस वर्सा ओनली ना. एक ही इक्वेशन का दो फॉर्मूला है. सो यू कैन यूज आइदर tan थीटा फॉर्मूला और cos थीटा फॉर्मूला. But why I am not using now this formula? Because we know that the value of 1090 is undefined. That is why I am trying to put in the first one. Okay. So if theta is equal to pi by 2, then the two lines are perpendicular, will be perpendicular. Because if I put here pi by 2, the value of cos 90 is 0. So अगर cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो मतलब a plus b is equal to 0 होगा. Yes. So a plus b equal to 0 means that is we can write it as coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0. It can be written as like this also. Yes, if theta is equal to pi by 2, then the two lines will be perpendicular. Therefore, it can be written as a plus b equal to 0. Why? Because the value of cos 90 is 0. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा तो रहेगा तो सिर्फ a plus b. So that's why a plus b equal to 0. Or it can be written as coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. Why?
because a is nothing but the coefficient of x square whereas b is nothing but the coefficient of y square. तो ये दोनों का summation 0 होगा. Okay, so these two sub points are very very important when you solve any numerical MCQ type numericals. ये सब conditions use हो सकता है. ठीक है. So this is all about the sum of the slopes, product of the slopes, and the angle between the pair of lines. Okay, few more results are there. I am going to discuss those formula also. So let us come to the next point. Next formula is the equation of a pair of lines passing through the origin. The equation of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is, look at the equation, bx square minus 2hxy plus ay square equal to 0. Once again I am repeating the formula. The equation of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to this line, which will be given in the question, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, is bx square minus 2hxy plus ay square equal to 0. ठीक है? So let us take one example, that find the equation of the pair of lines. Find the equation of the pair of lines passing through the origin and perpendicular to 5x square minus 2xy minus 3y square is equal to 0. Okay, once again I am repeating the question. Find the equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to this line, perpendicular to the line 5x square minus 2hxy minus 3y square equal to 0 is what. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है मैथ्स को. पहले क्या करना है, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो. लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b and h. So if you compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then see what will happen. A equal to 5, b is equal to minus 3 and h is equal to 1. Twice h is equal to minus 1, I think. Yeah, twice h is equal to minus 2, so h is equal to minus 1. Alright, so ये हो गया a, b और h का वैल्यू. Now what is the equation of lines passing through the origin and perpendicular to this one? Bx square. What's the value of b? B is minus 3, so minus 3x square minus 2hxy. So the value of 2h is minus 2. तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर minus 2 into minus 1 xy plus ay square. What is the value of a? A is 5. So 5y square. This is equal to 0. Or this equation can be written as, if you take minus common, then this equation can be written as a 3x square. It will be plus, but if I take minus common, it will be automatic minus 2xy minus 5y square, which is equal to 0. So this is the equation of line. This is the equation of line passing through the origin and perpendicular to 5x square minus 2xy minus 3y square equal to 0. It's very simple. लेकिन यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव पैटर्न में डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल. जो फॉर्मूला दे रहा हूं, इमीडिएटली आई एम गिविंग द एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द एग्जाम्पल. ऑलराइट, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, the equation of a pair of lines passing through the point x0 comma y0. The equation of a pair of lines passing through the point x0 comma y0 and perpendicular to ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is b into x minus x0 whole square minus twice h into x minus x0 into y minus y0 plus a into y minus y0 whole square is equal to 0. Now look at the difference between this point and the previous one.
इसमें दिया गया है पॉइंट x नॉट y नॉट, बट इन द प्रीवियस वन ओरिजिन दिया गया था. यस, द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो ओरिजिन मतलब तो 0 0 होगा कोऑर्डिनेट, इसीलिए x नॉट और y नॉट का वैल्यू 0 0 है. सो दैट्स व्हाई नो नीड टू मॉडिफाई लाइक दिस. बट नाउ इफ द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास नहीं होके दूसरा कुछ पॉइंट से अगर पास होगा तो फिर उसका इक्वेशन क्या होगा. ठीक है, यही डिफरेंस है. लास्ट फॉर्मूला में ओरिजिन से पास हुआ था और इसमें ओरिजिन नहीं, दूसरा कुछ पॉइंट से पास होगा, तो फिर ये फॉर्मूला को यूज करना है. ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन intersecting, find the equation of pair of lines intersecting at 2, -1. The question is find the equations of pair of lines intersecting at 2, -1 and perpendicular to 6x square minus 13xy minus 5y square is equal to 0. This is the equation of pair of lines. Okay, once again I am repeating the question. Find the equation of pair of lines intersecting at 2, -1 and perpendicular to this line. Right? So देखो intersecting at which point? 2, -1. मतलब origin से पास नहीं हो रहा है, वो दूसरा कोई पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इसको x नॉट y नॉट एज्यूम करना है. ओके, so before that first of all you find out the values of a, b and h. वो सबसे पहला काम है. So if you compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, here a equal to 6, b is equal to -5 and h is equal to -13/2 because twice h होता है. So twice h का वैल्यू अगर -13 होगा तो h का वैल्यू -13/2 होगा. So ठीक है, so a, b और h का वैल्यू मिल गया. Now write down the equation b into x minus x naught. So b, what's the value of b? b is -5. So -5 into x minus x naught. X naught is here 2 whole square minus twice h into, the value of twice h is -13. So -13 into x minus 2 into y plus 1 plus a is 6 into y plus 1 whole square is equal to 0. एकदम ठीक ठाक से पुट करना है. ठीक है, आफ्टर दैट यू जस्ट एक्सपांड इट. सो -5 into this will be x square minus 4x plus 4 minus plus 13. Here it will be then xy plus x minus twice y minus 2 plus 6 into y square plus twice y plus 1. This is equal to 0. All right. So now again expand it. So it will be then minus 5x square plus 20x minus 20 plus 13xy plus 13x minus 26y minus 26 plus 6y square plus 12y plus 6 is equal to 0. Or it can be written as, if I take minus common, then this equation can be written as 5x square minus 13xy हो जाएगा. तो फिर आफ्टर दैट 20x 13, that is 33. So minus 33x minus 26y plus 12, that is minus 14. It will be plus 14y 6y square minus 6y square minus 20 minus 26 minus 46 plus 6, that is minus 40. It will become plus 40. This is equal to 0. Look at the equation now. 5x square minus 13xy minus 33x plus 14y minus 6y square plus 40 equal to 0. What kind of equation is this one? This is also the combined equation of pair of lines only. It is also the combined equation of pair of lines. But यहाँ पे क्या किया गया है? कांस्टेंट है. कैसे पता चला कि इसमें कांस्टेंट है बोल के? बिकॉज अगर कांस्टेंट होगा तो देन ओनली द इक्वेशन लुक्स लाइक ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ऐसा फॉर्म में आता है और ये इक्वेशन भी वैसा फॉर्म में ही आया. ठीक है, तो
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो टाइप का ही इक्वेशन हो सकता है, विदाउट कांस्टेंट एंड विद कांस्टेंट। तो अगर विदाउट कांस्टेंट होगा तो द इक्वेशन विल बी लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट लेना है तो आफ्टर एक्सपांशन, आफ्टर कंबाइनिंग द टू इक्वेशन, you may get the equation in the form of ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ठीक है? So this is all about the equations of line passing through origin and perpendicular to the given line, and the equation of line, pair of lines passing through any point other than origin and perpendicular to the given line. Okay? So ये तो हो गया कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 का कंडीशन, जितना कंडीशन था, जितना फॉर्मूला था दिया। अभी ये फॉर्मेट में, अगर इक्वेशन ये फॉर्मेट में होगा तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये फॉर्मेट में होगा तो इसका भी कंडीशंस होगा। तो वो कंडीशंस में डिस्कस करूंगा अभी। ओके।